Is it fine now? Am I audible? Am I audible clearly? हाँ स्टार्ट करिए स्टार्ट करिए ऑलराइट. Hello, good evening everybody. Good evening. Welcome to Arifin. This is just a small analysis. ପିଲାମାନେ Arifin platform ରେ ଆମେ ଆଜି discuss କରିବା କ'ଣ ନା NTPC recent जो exam ହେଲା तारो question analysis. Before moving ahead, a very happy Rath Yatra to everybody. We are in Odisha right now. ଆଉ NTPC national level रो ଗୋଟେ exam of course. କିନ୍ତୁ ए exam ପାଇଁ approach କ'ଣ ରହିବା ଦରକାର ଆଉ question जोटा ଆମେ discuss କରିବା ଏଥିରୁ ବହୁତ ଗୁଡେ question ଆମେ class ରେ discuss ବି କରି ସାରିଛନ୍ତି. I'm sure ଆମ class ର students ମାନେ ଏ question ଗୁଡା miss କରିନଥିବେ. Okay. So let us start first. Tapre, by the time I'll tell you, different areas of focus. Okay. So NTPC exam, Railway Recruitment Board conduct korche. Phase wise exam हुए, computer based test exam हुए, गोटे दिन रे multiple shifts थाए. Okay. Our questions अपन जीके रे देखिबे जदि around you see 25 questions normally आसुची. तो गोटे गोटे क्वेश्चन देखि देखि जिबा आउ ए क्वेश्चंस गुडा प्रति अप्रोच कोन रहिबो. जदि ओवरऑल देखिबा 25 क्वेश्चंस रहउची सेथरु केतरा क्वेश्चन हमरो को एरिया रो आसुची सेटा भी हमें टिके नोटिस करबा. ऑलराइट. अच्छा, सो फर्स्ट क्वेश्चन देखंतु. दिस इज ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ. एटा हमें डिस्कस करचंदी जून 20 सेकंड शिफ्ट रो क्वेश्चन. ओके. सो क्वेश्चन को कोन पचरची, व्हिच पोएट्री कलेक्शन वाज पब्लिश्ड बाय सरोजिनी नायडू इन 1905. पिला माने जदि हिस्ट्री विषय रे किछि बेसिक आइडिया अछि ताले जानिथिबे सरोजिनी नायडू शी वाज ए फ्रीडम फाइटर. तांको नाइटेंगेल भी कहउथले. ऑलराइट. एटा आसिला कोन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री रो. मॉडर्न हिस्ट्री रो ये गोटे क्वेश्चन आसिला. ऑलराइट. एंड क्वेश्चन कोठु आछि ना फ्रीडम स्ट्रगल बेसिकली. ओके. तो आपन को काम कोन ना मॉडर्न हिस्ट्री जेतबेले भी आपन पढुचंती सेतबेले फोकस करिवे कहा उपरे ना नेशनल लीडर्स मानको उपरे. ओके. नेशनल लीडर्स हेले कि तांको एसोसिएटेड जो इन्फॉर्मेशन गुड़ा अछि सेगुड़ा ऊपर फोकस करिवे. ऑलराइट. अच्छा, सो यार आंसर जदि देखिबा हमें दिस इज वेट जस्ट अ मिनट. हाँ हाँ. सो दिस इज गोल्डन थ्रेशोल्ड. वेरी पॉपुलर बुक. आउ ए बुक ता तांको गोटे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करथिला. ऑलराइट. नाइटेंगेल ऑफ इंडिया तो तांको किए ना देथले. It was Gandhiji who gave her the name of Nightingale of India. किंतु ए ना पाइबा पछरे बैकग्राउंड तो एटू स्टार्ट हेतला. ओके. नाइटिंगेल ऑफ इंडिया रो टाइटल पाइले एई बेसिस रे. ओके. द गोल्डन थ्रेशोल्ड पब्लिश्ड इन 1905. वेरी वेरी इंपोर्टेंट बुक. एग्जाम रे बुक्स एंड ऑथर साइड रो भी आसी परिबो, हिस्ट्री रो भी क्वेश्चन आसी परिबो. ऑलराइट. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 आसला कोन, अंडर व्हिच ऑपरेशन डिड विंग कमांडर अक्षय सक्सेना कैरी आउट the mission in the Arabian Sea on March 16, 2024. देखो तो एग्जाम हैला 2025 रे. ऑलराइट. आउ एग्जाम रो जस्ट पूर्व माने अराउंड 1 ईयर बैक रो क्वेश्चन से पचारछि.
राइट देखो क्वेश्चन एग्जाम है 2025 रे आउ क्वेश्चन आसे जस्ट अपन देखो अराउंड मोर देन 12 मंथ्स ओके तो अपन गोटे जिनस नोट करंतु करंट अफेयर्स लिखिला बेले अपन कोन कोन जिनस ऊपर फोकस रहबा दरकार ओके तो यार आंसर कोन हे गला यार आंसर होची ऑपरेशन संकल्प ऑपरेशन संकल्प हाँ सो यू सी आमे जतले एग्जाम रे बसुचंती सेतबेले आमे ए जिंस भी माइंड रखिबा जे केते पुराना करंट अफेयर्स हम पढिबा ऑलराइट अच्छा सो दिस इज वन वेयर डिड यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल इनॉग्रेट द नेशनल टर्मरिक बोर्ड देखो ये एग्जाम है जून रे आउ ए क्वेश्चन आसी जनवरी रू ऑलराइट सो आमे माइंड रे जोटा थाई ना कि 6 मास पूर्व करंट अफेयर्स पढिबा सब बेले से रूलटा काम रे लागुनी ओके अच्छा जत्ते बेले भी गवर्नमेंट किछि नुवा इंस्टीट्यूशन तयारी करछि तो आपन को काम सेगुडा को कोन करिवे नोट करिवे ऑलराइट से इंस्टीट्यूशन ही आपन को एग्जाम रे क्वेश्चन ही जिवो जेमति कि रिसेंटली रिसेंटली हमें देखिले राइट हाँ मुझे कौन कहते ना whenever the government is coming up with some kind of institution आपन को काम कौन से institution उड़ा वो करंट अफेयर्स निजे खाता रे लिखबे ऑलराइट करंट अफेयर्स खाता रेगुलरली मेंटेन करबा होची गोटे एस्पिरेंट रो काम दिस इज द ड्यूटी एक्चुअली है ना सेटा को जेमते खिलाफ करिवे ताहले हमें क्वेश्चन मिस करी करी जीवा तापर एग्जाम रे है ना सो दिस इज नेशनल टर्मरिक बोर्ड निजामाबाद तेलंगाना रे देखिबा लास्ट को हमें कौन करि परिबा या ऊपर ओके देन by which act the East India Company was established पिला माने इंडियन पॉलिटी रो फर्स्ट चैप्टर द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से चैप्टर रे डायरेक्टली स्टार्ट कर 1773 रेगुलेटिंग एक्ट रू किंतु जतले पढुचंदी तार बैकग्राउंड भी तो पढियो पडिबो ए क्वेश्चन टा श्योरली हम क्लास रे डिस्कस करचंदी ऑल द पॉलिटी स्टूडेंट्स जो माने भी हम क्लास रे बसतले नोट रे भी लिखाई छी ईस्ट इंडिया कंपनी विषय रे ओके द बैकग्राउंड इटसेल्फ है ना माने 1773 इटसेल्फ तो स्टार्ट करिबाने ताटू पछकु जिबा व्हाई द कंपनी केम इन इंडिया एंड व्हाई ईस्ट इंडिया कंपनी आई एम श्योर यू मे बी नोइंग इट व्हाई ईस्ट इंडिया कंपनी व्हाई नॉट वेस्ट इंडिया ओके सो यार आंसर होची कोन रॉयल चार्टर एक्ट दैट वाज इन 1600 रे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्वीन हेले परमिशन देले एंड अल्टीमेटली कंडीशन कोन थिला जे वर्ष को वर्ष कंपनी ताको रेवेन्यू दबो ओके अब ए पॉइंट को नेकी ही बहुत जिंस हो जाय छै आगो को ओके दैट वी हैव आल्सो डिस्कस्ड तापरे व्हाट वाज द मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर ऑफ धोलावीरा पिला माने हिस्ट्री रो तीनटा पोर्शन तीनटा यू कैन से तीनटा स्टेजेस ऑलराइट फर्स्ट द एंशिएंट मेडिएवल एंड द मॉडर्न history is all about long continuous story okay which is being told from generation to generation all right बहुत जगह डॉक्यूमेंटेड अच्छी बहुत जगह डॉक्यूमेंटेड नहीं ऑलराइट तो जदि हम धोलावीरा विषय रे देखिबा इंडस वैली सिविलाइजेशन रो ये होची गोटे बहुत ही प्रोमिनेंट साइट गुजरात रे लोकेटेड
ये कौन पाई फेमस थिला ना तारो एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम पाई ठीक है नोटिस करंतु धोलावीरा अछि कोठी गुजरात इज बेसिकली एन एरिड स्टेट ऑलराइट सो एरिडिटी सेठी एते अधिका अछि वाटर इज अ प्रीशियस रिसोर्स इन दोज स्टेट्स ओके तो सेमाने वाटर को केमिति मैनेज कर परियो वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स पूरा सेमाने बेटर जानिथिले डेवलप करथिले एथिमे धोलावीरा एग्जाम रे बहुत प्रोमिनेंट क्वेश्चन गुटे धोलावीरा ऑलराइट अच्छा व्हिच मूवमेंट डिड नॉट हैपन इन 20th सेंचुरी वेरी इजी वन पचार 20 अच्छा एथिरे ना गोटे जिनस कहि रखुची चारटा ऑप्शन मु देई पारुनी कोन पई बिकॉज एगुडा सब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हेची ओएमआर शीट आउ हार्ड कॉपी बेस्ड टेस्ट नुह से जी भी मो स्टूडेंट से मन पकईकी जिनस गुड़ा मते एक क्वेश्चन गुड़ा पठेइछंती ऑलराइट सो आई एम नॉट एबल टू प्रोवाइड द ऑप्शंस ऑलराइट सो यार आंसर कोन हे परिबो ना कुका मूवमेंट आंसर ऑप्शन रे कुका मूवमेंट ही थिला कुका मूवमेंट वाज अ मूवमेंट इन 19th सेंचुरी ऑलराइट दैट वाज आल्सो कॉल्ड नामधारी मूवमेंट ऑलराइट एंड टू दैट टू रिवाइव सिखिज्म ओके अपन मन भलसे जानथिबे औरंगजेब जेतले ही वाज रूलिंग इंडिया as an emperor से समय रे Sikhism that was developed अलग अलग गुरु मान को assassinate भी कराई छी ओके देन क्वेश्चन आसला कोन व्हाट इज सीपीयू पिला माने एई पॉइंट ता बारंबार मु क्लासरूम रे कोहे पिला को जेतेबेले भी ओरिएंटेशन क्लासेस उडा निये पिलांकर जे जेतेबेले भी एक्रोनिम्स अपन देखुचंती जे कोन सी एक्रोनिम हेताओ फॉर एन एग्जांपल आई टेल यू वेरी कॉमन वन राइट सपोज आई आस्क यू व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीआई यूपीआई आमे समस्त जानचंती यार फुल फॉर्म कोन ओके आमे क्यूआर कोड विषय समस्त जानचंती मु पचारुची क्यूआर रो फुल फॉर्म कोन वेरी इजी वन जदि पचारि भी मु आपनको ईएमआई रो फुल फॉर्म कोन हाउ मेनी ऑफ यू नो इट बहुत जनरल जिंस आम आख पाखरे आमे देखुचंती भी किंतु आमे एगुडा नोटिस करंतीनी राइट तो आम काम एबे कोन ना एगुडा को नोटिस करिबा आउ याकू बेस करके हम प्रिपरेशन करिबा कोन कि एक्रोनिम्स गुडा एग्जाम रे गोटे पॉपुलर क्वेश्चन सीपीयू किए जानने कहतु ए क्वेश्चन टा सेतबेले ही भूल पारिबो जेतबेले आमे एब्सेंट माइंडेड थिबा ओके नले खुशी रो गोटे भूल कर दे पारिबो है ना we cannot afford that huh? The government of India has announced a 6-year plan for which crop in the budget of 2026 देखो तो budget that was announced in February and that was for 2025-26 कथा होची बजेट रु दीटा क्वेश्चन आसी तो हमें बजेट डॉक्यूमेंट जेहेतु गोटे इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट गोटे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट ताको हमें डेफिनेटली कवर करिबा हाइलाइट्स गुडा क्लास रे डिस्कस भी करा हेतला एंड आई एम श्योर एगुडा सब एग्जाम रे डेफिनेटली हम पिलांको हेल्प करथिबे सो द कमोडिटी वाज पल्सेस राइट आउ पल्सेस विषय गोटे बेसिक आइडिया जे देबी इंडिया होल्ड्स अ टॉप पोजीशन इन पल्स प्रोडक्शन आम देश रे ग्रीन रेवोल्यूशन हैला ग्रीन रेवोल्यूशन रे राइस आउ व्हीट को अधिका प्रायोरिटी दिया गला लेटर हमें पल्सेस रे भी अधिका सेल्फ सफिशिएंसी आनी असले इट आल्सो हैज द लार्जेस्ट कंज्यूमर एंड सिग्निफिकेंट इंपोर्टर ऑफ पल्सेस 25% of global pulse production is from India okay अच्छा next what amount has the government allocated for Indian Coast Guard पिला माने करंट अफेयर्स लिखला बेले टिके एटा भी लिखुथिबी my message is very clear every day write current affairs write relevant points किंतु पॉइंट्स रे एई क्वेश्चन गुडा को देखि के लिखि माने बजट एलोकेशन ऊपर भी क्वेश्चन आसुची यस आई बिलीव इट एंड आई एम वेरी श्योर ए जिंस गुडा मन रुहेनी किंतु आपण रेंज तो मन रख परिबे एक्जेक्टली मोर 9676 crore एटा एक्जेक्टली मन न रही पारे रेंज मन रही पारिबो ओके तो जदि क्वेश्चन एमिति आसुची ताले हमें प्रिपरेशन भी सेमती ही करिबा नेक्स्ट क्वेश्चन आसला इलेक्शन कमिशन रो पिला माने ए क्वेश्चन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो आसला इलेक्शन कमिशन आर्टिकल 324 टॉक्स अबाउट द इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया अपॉइंटमेंट ऑलराइट एंड मेनी मोर कथा होची ये पॉलिटी क्लास रो गोटे बेसिक कांसेप्ट एवडा हमें क्लास रे डिस्कस भी करचंती ओके एंड मेनी ऑफ यू मे बी नोइंग इट आर्टिकल 324 न्यूज रे थिला लास्ट ईयर जनरल इलेक्शंस हला ता परे परे अलग अलग स्टेट रे इलेक्शन हला ओके अच्छा नेक्स्ट आसला रणजी ट्रॉफी पिला माने ए क्वेश्चन केते थर आसी तार हिसाब नाही रणजी ट्रॉफी दिलीप ट्रॉफी देवधर ट्रॉफी एवडा सब कॉमन क्वेश्चन और रणजी ट्रॉफी तो जानी सुनी की बारंबार पचारंती रणजी ट्रॉफी ए वर्ष के जितिला एटा क्वेश्चन थिला एंड एटा भूलै नथिबो राइट एग्जाम रे किछिटा क्वेश्चन एमती थाए जे बहुत इजी आसुछ आउट ऑफ 25 अपन धरतु सम 5 to 6 क्वेश्चंस बहुत इजी थिबो माने पिला को गोटे इंटरेस्ट क्रिएट करिया पई नहले
ताको टिके माने जस्ट टू गिव देम ए बिट ऑफ रिलीफ इन द एग्जाम हॉल ताको इजी क्वेश्चन पचरा जाए दैट्स फेयर ओके देन शॉर्टकट की पचार कंट्रोल प्लस एफ कंप्यूटर गोटे एरिया जोठी आपण बसिबे जे कोनसी एग्जाम रे बसुचंतु से कंप्यूटर क्वेश्चन आसुची ही आसुची ऑलराइट से शॉर्टकट कीज पचार दबो फुल फॉर्म पचार दबो डिजिट्स ऊपर पचार दबो सॉफ्टवेयर ऊपर पचार दबो पचारुची ओके सो फोकसटा सेठी भी रहिबा दरकार अच्छा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया ओरिएंटेशन क्लास रे प्रथम दिन ही पिला को ए जिंस हम कहि दिए जे हमको प्रथमे जो लैंडमार्क को जीके स्टार्ट कोठु करबा पिला माने जीके जदी कोठु तुम स्टार्ट करबा को चाहछो यू स्टार्ट इट फ्रॉम योर मदरलैंड दिस कंट्री इटसेल्फ ओके भारत को आगे भल से जानतु जदी को जानिबे ना बहुत गुटे क्वेश्चन हमरो सॉल्व हो जिवो ऑलराइट आज मॉर्निंग रे ही पिला को कहउतले जिंस जे वेयर टू स्टार्ट इट इट्स इट ऑल स्टार्ट्स विथ आवर ओन कंट्री भारत को जानतु क्वेश्चन कौन पचारला लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट्स ओके नोटिस करंतु एठी इंडिया रो लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट केते रहउची एट देखले इट जदि हमें लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कहबा 68 डिग्री 7 मिनिट्स रो जदि हमें नेबा 92 97.25 डिग्रीज रहउची 97 degrees 25 minutes ऑलराइट लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जदि नेबा 37.6 डिग्रीज माने 8.4 डिग्रीज रु नेकी 37.6 डिग्रीज एटा होची तारो कोन ना लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑलराइट एटी क्वेश्चन कोन कर परियो ना व्हिच इज द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया व्हिच इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया व्हिच इज द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया व्हिच इज द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इजी क्वेश्चन ऑलराइट किंतु जदि सदर्न मोस्ट पॉइंट हमें कहबा आई एम राइटिंग इट ओके नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट आसला कोठी ना इंदिरा कॉल दिस इज इंदिरा कॉल है ना सदर्न मोस्ट पॉइंट पिले दीटा अछि ठीक है नोटिस करबे एटा सदर्न मोस्ट पॉइंट रे मेनलैंड ऊपर जे देखिबा दिस इज केप कोमोरिन दिस इज केप कोमोरिन मेनलैंड रे आ जदी हमें एक्सटेंट हिसाब रे देखिबा हमर टेरिटोरी हिसाब रे देखिबा इट इज इंदिरा पॉइंट दिस इज इंदिरा पॉइंट दिस इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया अच्छा वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट आसला कोन ना गुहार मोती बहुत गुटे स्टैंडर्ड बुक्स घरिकारे लेखा है ऑलरेडी ओके जे कौन सी जीके बही अपन धरंतु प्रथम पेज रे इनफॉरमेशन पड़ुची ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट आसला किबिथु ऑलराइट द ईस्टर्न मोस्ट विलेज इन इंडिया किबिथु ओके सो दीज आर वेरी जनरल क्वेश्चंस जोड़ा भूल हेबा कथा नुह पिला माने ऑलराइट देन अच्छा सी द नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड दिकु व्हिच इज यूज्ड बाय द ट्राइबल सोसाइटी दिकु एटा एमितिया क्वेश्चन गोटे पडिसी एग्जाम रे बारंबार नो कि दिकु मानको माने जदि आपण मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़िबे स्पेशली यू नो ब्रिटिश इन इंडिया है ना ट्राइबल मानकर सहित जो कॉन्फ्लिक्ट्स जोटा हेनी द ट्राइबल रिवोल्ट सेतबेले इश्यूटा थिला आउटसाइडर्स मानकर ट्राइबल्स माने भाबुतले ब्रिटिश माने होचंती आउटसाइडर्स से माने ताको दिकु कहउतले एंड इफ आई एम नॉट मिस्टेकिंग दिस वाज द यू नो बिरसा मुंडा और द मुंडा रिबेलियन ओके अच्छा नेक्स्ट देखो व्हिच पास इज लोकेटेड ऑन द पीर पंजल माउंटेन रेंज माउंटेन पासेस अगेन इंपोर्टेंट क्वेश्चन माउंटेन पास रे अपन देखो एठी पीर पंजल रेंज रे देखि पारछो एठी हाँ बनिहाल पास इज इट देयर द बनिहाल पास ओके द बनिहाल पास नेक्स्ट यू सी which country in India does not share the land border as I said कि फर्स्ट क्लास रे ही हमें जिनसो डिस्कस करछंती पिला माने जे इंडिया रो जो आइडिया अछि द आइडिया अबाउट इंडिया आपण एटा को पूरा क्लियरली रखथिबे ओके व्हाट इज इंडिया हु आर ऑल द नेबर्स ऑफ इट एटा सब जनरल एग्जाम रो क्वेश्चन पड़ी जाउची ओके सो एठी आंसर कोन हेजिबो देखंतु हु आर ऑल द यू नो इमीडिएट नेबर्स लैंड नेबर्स असले पाकिस्तान अफगानिस्तान नेपाल चाइना म्यांमार बांग्लादेश भूटान राइट डिस्टेंट नेबर किए ये श्रीलंका देन which of the following is a raga of Carnatic music
अनयूजुअल क्वेश्चन आई विल से कोन पे कहले एटा को कैटेगरी रे हमें पकेबा फर्स्ट राइट ये आसुची हिस्ट्री और कल्चर कल्चर रू ये गोटे क्वेश्चन आसिला राग भैरवी कर्नाटिक म्यूजिक रो ये होची गोटे राग वेरी पॉपुलर राग ओके स्पेसिफिकली कई पिला या पढ़ू ना किंतु एग्जाम रे आसीची बोली आपन पढ़िया पड़ियो राइट चलो तो नेक्स्ट आसिला मैकमाहोन लाइन पिले केते डिफिकल्ट क्वेश्चन मते कहले जीए इंडिया को भल से पढ़ी माने नियंतु अरुणाचल प्रदेश आमे भल से लिखि बेसिक किछरा जिंस अरुणाचल प्रदेश में मैकमाहोन लाइन अछि इट्स नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन एट ऑल ओके एटा भूलेबा कथा नुआ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन देखो एक तो धोलावीरा पचारला सेकंड इंडस वैली सिविलाइजेशन ऊपर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन किछरा पचारला ओके तमने इंडस वैली रो दीटा क्वेश्चन आसला देन हु डिस्कवर्ड पेनिनसुलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इजी क्वेश्चन इजी आंसर नो कमोडिटीज की इंस्ट्रूमेंट्स तारो डिस्कवरर्स एगुड़ा सब डायरेक्टली पचार एग्जाम रे क्वेश्चन आमे ताको मिसलेनियस जीके कहउचंती किंतु यार लिंक कोठी ना कोठी करंट अफेयर्स सहित रोची ही रोची ओके अच्छा डीएनए रो स्ट्रक्चर पचार से एटा भी कोन भूल कला वाला क्वेश्चन तो नुह ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर करेक्ट करंट अफेयर्स रो क्वेश्चन पचारला सीमा अवार्ड रे बेस्ट एक्ट्रेस पाइले किए ऐश्वर्या राय एंड आई एम श्योर एमितिया क्वेश्चन में भूल करि नथिबा मुझे गोटे दिन गोटे पर्टिकुलर सेशन रो ही क्वेश्चन डिस्कस कर हाँ एमती तो बहुत गुड़े क्वेश्चन आसो राइट अच्छा H5N1 फ्लू फर्स्ट फाउंड इन विच कंट्री दिस वाज सदर्न चाइना एटा में आराम से गेस भी कर परिबा जेतेरा सब एमितिया डिजीज गुड़ा हमें देखुछन ना ऑलमोस्ट सब गुड़ा या तो चाइना रू ओरिजिनेट हेतिबो नहले अफ्रीका देन यू सी युद्ध अभ्यास मिलिट्री एक्सरसाइज क्लास रे संडे क्लासेस रे हमें डिस्कस भी करिसंती संडे इज ऑफ कोर्स अ वेरी टायरिंग डे ऑफ कोर्स थ्रू आउट द वीक क्लास होची संडे रे भी करंट अफेयर्स क्लास होची ओके एट आरिफिन वी यूज टू डू व्हाट वैल्यू एनहांसमेंट वैल्यू एडिशन ऊपर फोकस रखू एमिति नो कि केही भी गोटे एडमिशन कर देला आउ विल लूज द कांटेक्ट नेवर ओके से केमिति इंप्रूव करि परिबो ता ऊपर अधिका फोकस थाए सेते पे संडे भी हमें क्लासेस करूचे संडे गोटे एटलीस्ट क्लास रोची 1.5 to 2 hours रो माने इट इज एन एनालिसिस क्लास ओके एतरे कोन रोची ना थ्रू आउट द वीक रो करंट अफेयर्स हैला कि मोस्ट प्रोबेबली एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली कोन ना पिला को इश्यूज कोड रोची कोन प्रॉब्लम रोची दैट आई पर्सनली ट्राई टू लुक इनटू आउ तार सॉल्यूशन केमति बाहरी परिबो पिला केमति इंप्रूव करबो ता ऊपर फोकस रहे ओके चलो सो युद्ध अभ्यास हमें एक्सरसाइज डिस्कस भी करचंती इंडिया यूएस इजी क्वेश्चन प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रे इंडिया रो रैंकिंग पचारिची 151 फैक्चुअल क्वेश्चन ऑफ कोर्स किंतु जदि केयरफुली अपन लिखिथिबे करंट अफेयर्स निज नोट रे ताले ए क्वेश्चन ता आराम से होबो डिफिकल्ट नुह ये डिफिकल्ट कहाँ पई कहले जे सुपरफिशियली याको पढ़ देथिबो कोन से गोटे दिन माने तो एग्जाम आगो को अछि गोटे कोट गोटे पीडीएफ डाउनलोड करके करंट अफेयर्स पढ़ देले कि कोड गोटे क्विज कर देले ए प्रकार रो जो हैंडीकैप प्रिपरेशन यदि अपन करिवे ना ताले डेफिनेटली एटा भूले जिवो 151 टा एग्जाम रे डेफिनेटली 161 हे जिवो ओके चलो तो इंडियाज लार्जेस्ट सलाइन वाटर लेक ए क्वेश्चन केही भी भूल करबा कथा नुह आई से लार्जेस्ट सलाइन वाटर लेक एक तो गोटे जिंस एटी कहबी इट इज नॉट ए लेक इट इज ए लगून चिलिका को क्लासिफाई करा होची लगून हिसाब रे ऑलराइट तो आपन को काम कोन देखो दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन एटा भूल करबा नाही ओके सो पॉइंट इज दैट ए जो सेशन हमें आज नेले ए सेशन रो व्हाट आर द टेक अवेज ओके नंबर 1 आपन को काम कोन कहले गोटे नोट तैयारी करिवे व्हाट आर द होमवर्क्स यू कैन से नंबर 1 गोटे नोट तैयारी करिवे कहा पई ना करंट अफेयर्स पई गोटे नोट रहिबो आउ सेथिरे आपण डेली बेसिस रे करंट अफेयर्स लिखिबे डेली आई टेल यू बिकॉज एवरी डे करंट अफेयर्स इज चेंजिंग एवरी डे न्यू इश्यूज आर कमिंग अप तो आपण को काम कोन ना डेली बेसिस रे करंट अफेयर्स को लिखिबे एंड ट्राई टू यू नो राइट एटलीस्ट 10 पॉइंट्स मिनिमम 10टा लिखिबे कारण कि 10टा तो ही जीव ना इंटरनेशनल रू दीटा नेशनल रू दीटा स्पोर्ट्स रू जदी गोटे दीटा हुए मिसई की टोटल हे जीव 10टा ओके 10 प्लस लिखिया चेष्टा करंतु सोर्स भलो रखंतु ऑलराइट डेली बेसिस रे करंट अफेयर्स अच्छा वीकली करंट अफेयर्स लिखिबाटा मु माने रेकमेंड करिबिनी बिकॉज़ डेली बेसिस रे लिखिबार इंपैक्ट अधिक ओके लिखिबे
नेक्स्ट आपन को काम कोन ना रिवाइज करिवे रिवाइज ऑलराइट अच्छा सेकंड कोन ना स्टेट्स इंडिया रे जेतरा स्टेट्स अछंती जेतरा यूनियन टेरिटोरीज अछंती तांको ऊपरे कोन करिवे गोटे सेपरेट नोट करिवे ऑलराइट लिखिबे पूरा प्रति स्टेट पे आपण 30 टा पॉइंट्स लिखिबे ऑलराइट अछंती हमर बहुत गुटे स्टूडेंट अछंती जो माने लास्ट अराउंड 6 to 8 मंथ्स हला प्रिपेयर करी आछंती हम सहित आउ से माने ऑलमोस्ट सबु स्टेट और यूनियन टेरिटोरीज रे नोट्स रेडी कर सारछंती एंड आई एम वेरी श्योर जी एटा लिखि दबो ता पई मिसलेनियस जीके इज जस्ट लाइक ए केक वॉक बहुत इजी हिजिबो यू विल डेफिनेटली टेल मी कि नहीं सर यू वर राइट ओके अच्छा ऑडियंस जदी पिला माने फाइनल वर्ड्स ओके जदी आपण मानको काहा को भी जीके रे डर लागु इफ यू आर न्यू टू दिस प्लेटफॉर्म इफ यू आर स्कैर्ड ऑफ जीके so just come and take a class with Arifin गोटे डेमो क्लास नियंतु Arifin रे ओके विल ट्राई टू चॉक आउट योर प्रॉब्लम्स आपण फ्रेशली प्रिपेयर करचंती आपण 2-3 वर्ष होला प्रिपेयर करी करी आछंती किंतु तथापि जीके रे सेई ऑप्टिमम माने रिजल्ट्स पाई पारु नाहंती ताले मु गोटे जिंस रेकमेंड करबी यू कम टू Arifin ऑलराइट मीट मी एंड यू टेक ए डेमो we'll try to chalk out your problems and we'll definitely come to a conclusion and the solutions okay so these are the final words so let's keep it here it was just a session I decided कि आमे रथ यात्रा रो एको स्टार्ट करिबा ओके ऑफ कोर्स एनटीपीसी अलग अलग लेवल रे एग्जाम करूची आमे तो अलग अलग प्रकार रे एग्जाम पे प्रिपेयर करूछु नेशनल लेवल एग्जाम ओडिशा बेस्ड एग्जाम ओके किंतु जीके एज फार एज जीके इज कंसर्न यू सी कॉन्फिडेंस सहित पिले प्रिपेयर करो ठीक जिनस जानो प्रिपेयर करो भल से ओके एंड आई एम श्योर यू विल सी ए गुड डे ऑलराइट सो लेट अस कीप इट हियर ओके थैंक यू सो मच we'll meet in the next class and next session with yet another kinds of such of a video all right so till then take care everybody bye bye all we'll meet again okay thank you so much